See how? Got it, I. But how over there? Actually, I'm not. Janice, can you start with the prayer, please? Avatar Meher Baba, beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. Help us all to hold fast to Baba's hand till the very end. Avatar Meher Baba ki jai. Avatar Meher Baba ki jai. Avatar Meher Baba ki jai. Jai Baba, everybody. So nice to see so many people today. Jai Baba, everybody. Jai Baba. It's so nice to see so many people today. In the beginning, I would like to invite all of you to join us in inviting our one and only Lord Meher Baba. This Lord Meher Baba, who resides in each and every heart, in each and every atom on this planet Earth, I would request Meher Baba to come and take over this meeting and join us. Not only that, but to take over the entire proceedings of this meeting. This meeting is supposed to be interactive, यानी कि question answers होने चाहिए, which I think would bear more fruits and it would make the program more interesting. Very briefly, I would just like to mention, मेरे में ये आदत है कि whenever I come across something nice, I always like to share it. Very briefly, आज टाइम नहीं है इसलिए मैं खाली इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो दारा अमृत है मेराबाद के, मोस्ट ऑफ अस नो देम, उनका बेटा मेहरवान, उसकी एक वीडियो है of his talk somewhere in America. It is something really worth listening to. बहुत ही सुंदर तरीके से उसने बहुत ही नेचुरल, मेरे जैसे ही कुछ भी पढ़े लिखे बगैर जो दिल में आया वो बोल दिया है. And it's very nice. उसका एंड जो है, that is the most beautiful part of it. खाली प्रॉब्लम एक ही है कि वो उसकी अंग्रेजी भाषा इज विथ अ लॉट ऑफ अमेरिकन एक्सेंट. तो जरा ध्यान से सुनिए, नहीं समझ में आए तो वापस रिवाइंड करके सुनिए, लेकिन सुनने के बहुत काबिल है. सो प्लीज डू दैट. आज जो हमारा प्रोग्राम है, हाँ, जैनिस ने ये लिंक चैट में रख दी है. So those of you who would like to listen to that program, this Meherwan's audio, please, it's a long audio, about 1 hour and 20 minutes, ऐसे कुछ है, but it's really worth sitting down and listening to. For today's program, never in the history of our center and this Thursday programs, a person has come for the third time. Twice कोई ना कोई आया है, मगर ये मेहर वीना एक ऐसी निकली कि जिसको थर्ड टाइम भी हमें बुलाना पड़ा. एंड द रीजन इज हर abilities and her talent. And आज we have decided to start off with ये कुंडा नाफडे जी का जो एक रिक्वेस्ट था
Thursday before last. वो एक she will sing that, followed by 2-3 other things, and then her experiences about being in Australia and क्या वो जब गई थी तब क्या क्या हुआ था वो, and अपने आए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया बेगम अख्तर का वो एक गजल अच्छी तरह से शी सिंग्स इट द बेस्ट दैट आई हैव हर्ड सो फार, तो वो एक गाएगी। और उसके बाद आखिर में शी विल बी सिंगिंग द भजन और द सॉन्ग और द वॉट एवर यू कॉल इट, जब बाबा खुद बोलते थे। तो दिस इज द लास्ट सॉन्ग दैट ही हैड सung। ये जो इसको क्या बोलते हैं, सरसों सरसों फूली, सरसों फूली आंखों में। कुंडा जी आप तो चैंपियन निकली एकदम। वो हम लोग वो ना ही वो खाली सुनेंगे, बट वी विल ट्राई टू इंटरप्रेट विच मे बी गुड, मे बी बैड, मे बी राइट, मे बी रॉन्ग। हमारी जो काबिलियत है उसके मुताबिक हम उसके समझने की कोशिश करेंगे। एंड दैट इज हाउ वी हैव प्लान। अभी बाकी की जो भी कुछ प्रोग्राम में उल्टी पुल्टी होवे वो सब बाबा की मर्जी से होगा। सो मेहरविना प्लीज टेक ओवर नाउ। जय बाबा। Jai Baba, Sam. And first of all, let me be very, very, very thankful to beloved Baba for making me such a bad performer. As Sam and Jimmy uncle say, the one who doesn't perform well has to come again and again. But I never knew that a bad performance will be so beautiful that I have to come again and again. So thank you, Baba. And I pray to him to take over and do things and make me say things the way he wants me to. Whatever will be shared, it is all his call. So, Kunda auntie, आपने फर्स्ट सेशन में इस गाने की रिक्वेस्ट की थी, एंड आई एम वेरी सॉरी कि वो सेशन में भी नहीं मौका मिला और सेकंड सेशन में भी मौका नहीं मिला। बट आज याद से मैंने ये डिसाइड किया ही था दैट आई विल बिगिन टुडे सेशन जो फरमाइश आपने की थी उस गाने से। सो दिस इज हुमा गजल, and Huma was the pen name for all those who may not be aware what is Huma. So Huma is the pen name used by beloved Meher Baba while writing the ghazals that he wrote in the years when he was undergoing through intense pain and suffering. So I'll begin today's session with Tu Hai Mehboobe Suhabani Guru Upasani Maharaj. Beloved God, you became the lowest among the lowly and rose above all. O Master Upasni Maharaj, your state is unique. Your face is of Allah, your Ram personified, and the image of bright light of God. You are the avatar of God. You are the Lord of every house. O Master Upasni Maharaj, you are the emperor of the two worlds. Huma is in love with you and becoming your beggar, begs you of your love, O Upasni Maharaj.
महबूबी सुहानी पास मेरा तू है महबूबी सुहानी गुरु पास मेरा तेरा है इश्क हक्कानी गुरु पास मेरा तू है महबूबी सुहानी गुरु पास मेरा न खोया तू न सो तेरा न पाया न जब तक राम पाया तू हुआ मकबूले यज़दानी गुरु पास मेरा बनाए बेहतर तू हुआ फिर सबसे बेहतर सबसे बेहतर तो रहा एक तारे लासानी गुरु पास मेरा हुआ तुझ पर फिदा तेरा गदा बनकर मुझे दे प्रेम भगवान ने गुरु पास मेरा तेरा है इश्क हक्कानी गुरु पास मेरा तू है महबूबी सुहानी गुरु पास मेरा अवतार मेहर बाबा की जय। Yeah, I'm sorry that I have cut down the song because of the time constraints. So actually it's a long song, which I just cut it off to 3 paragraphs. So that was quite quick. So I'm sorry for that. Yeah, so Sam, I think the way Jimmy Uncle did last time, question answer. So it goes easy and the ball keeps rolling. So you can shoot whatever questions you want to start with. Before I start with any questions, something very wonderful has happened here at the center. There are 2 men, one of them a little bit young, and he had come here last Sunday also. Today he's come with another gentleman, both deaf and dumb. And because Baba observed silence after this ghazal that you are going to sing, it is so significant about the silence part of it. And I'm very, very grateful कि मुझे ऐसे लगता है कि इनके बेस में खुद खुदा आके बैठे हैं. That is what I feel. Anyway, Abhi, Janice, do you want to ask any questions?
Janice, Yes, Shiva. Jai Baba. Yeah, and you've been a part of Lord Bata's Bombay Center's events and programs. And I specifically remember the events, that was my first event, Winning His Heart. And we had these groups, and it's a wonderful event that Bombay Center holds every year as a part of Baba's birthday celebration. So my question is, how was your experience in handling all these events at the Baba's Bombay Center, and any specific instances your experience we can share in connection to that? Thank you. Sure. Sure. Thanks, Janice, for that. So winning his heart. Sorry, is some- interrupt, Mervina. People are grumbling that the audio is not very clear. Okay. So I'll just repeat her question. Okay. Shall carry on, please. Yeah. So Janice asked me that because I've been a part of various activities at the Bombay Center, and winning his heart has been one of the ongoing activities. So she has asked me to share some of the experiences of winning his heart, right? So it happened from the day when the winning his heart got incepted. So it was like Manoj being the secretary of the center, and I being a part of all the the creative and the art activities at the center. So we were just discussing, and because I think that was the golden jubilee year of Bombay Center's golden jubilee year. So we wanted to do something special, and so we were just sitting and thinking and planning as to how we can do this and how we can make it special. And we need to come up with some activity which can go on a regular basis. So we were just thinking and sitting at the center only, and we were discussing. So is activity का कुछ नाम देना चाहिए. And sochte, suddenly, like, that name came to my mind, of course, given by Baba, winning his heart. And then the whole motto of behind winning his heart was कि पूरी तरीके से जितना हम कर सके कोशिश करनी है to win his heart, and for which this activity will give an opportunity. And how can one win his heart? By constantly remembering him, by constant remembrance of him, by obeying him, right? So through these activities, we thought it will give an opportunity to all those who will participate and be a part of this activity to remember Baba, to remain in constant remembrance of Baba. So that's how this activity started. And the motto was to bring in more and more people into it. Now it so happened कि first year जो था वो हम लोग ने publicly open रखा था. So children from so many schools had participated. There were so many people who were not Baba followers, who had never heard of Baba. They came and their children participated in the drawing event. Almost more than 100 children were there. And it was a super duper hit the very first year of winning his heart. And the response was tremendous. It went off very well. Then the next year, it was suggested that let us, conduct this in a competition form. All right. So then we decided that, chalo, let's come up with, different houses. और एक हाउस को एक हाउस कैप्टन दिया जाएगा. So अभी इसका how to name each and every house. So then we thought of naming each house as surrender, renunciation, sacrifice, and love. These are the 4 house names that we chose. And then each one was made the captain of the house. People amongst our organizing committee were only chosen to be the captain of the house, and I was chosen as the captain of Love House. And I was अंदर से मुझे इतनी खुशी हो रही थी, wow, because somewhere deep within मुझे 100% पता था कि कुछ भी हो, कैसा भी हो, कोई भी मेरे ग्रुप के अंदर हो, but my house is going to win for sure. ये पहले से ही पता था, because I knew that when Baba has come with the one and only message of love, so this house has to win. And
हम लोग को जिस तरीके से एक एक एक्सपीरियंसेस आए, जहाँ पे इन माय हाउस यू वोंट बिलीव दैट मेरे हाउस में ऐसे पार्टिसिपेंट्स आए कि जिन्होंने कभी लाइफ में कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, जो पब्लिक के सामने कभी आए नहीं थे, जिन्होंने कभी स्टेज के ऊपर पैर भी नहीं रखा था फॉर परफॉर्मिंग, नेवर सैंग इन लाइफ, नेवर एक्टेड इन लाइफ, ऐसे सब लोगों का सब पार्टिसिपेंट्स मेरे हाउस में थे ना। इन लोग का सबको तैयार करना, एंड देयर वर वेरियस इवेंट्स दैट वी हैड केप्ट। देयर वाज अ स्किट, देयर वाज अ सिंगिंग कंपटीशन, देयर वाज क्विज। सो ये सब चीजें थी, एंड आई टोल्ड माय पार्टिसिपेंट्स कि आई वांट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन ऑल द इवेंट्स एंड एंश्योर दैट we have to make this house win because it's love house, so we have to win. And Janice, I'm sure you remember you were a part of this love house, and that's how that was the first time when you came to Bombay Center, and that's how your journey being a part of this activities at the center started. And so we used to gather at Janice's place to practice the skit, okay, to do the skit practice. तो हम लोग को एक एक को टॉपिक दिया था, we picked up 2 topics. तो उसमें से एक जो टॉपिक था उसमें we had to present a play के अंदर play, बाबा के टाइम पे they used to present skits, so play के अंदर play था. Now it so happened कि मेरे ग्रुप में एक ही जेंट्स था, ओके, और 2 छोटे बच्चे थे उसमें. अर्चना, आई एम श्योर शी इज हियर and she is enjoying this because her grandson was a part of my house who was 7 years then. Archana, correct me if I am wrong. So he was the youngest, and the oldest participant in my house was Homai, who was I would not like to mention her age, but I'm sure she must be in her 60s or 70s. So she was the oldest among the participants. So it so happened कि एक ही जेंट्स था and the rest all of them were ladies. Rati was in my house, Pramila auntie was in my house, Homai auntie was there, Janice was there. तो हम लोग ने जो प्ले सिलेक्ट किया था उसमें सभी जेंट्स थे, ओके, ऑल द कैरेक्टर्स वर जेंट्स. तो अभी इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? एंड फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री of Bombay Center as far as dramas are concerned, ऐसे हुआ कि पहली बार लेडीज ने जेंट्स का किरदार निभाया. एंड दैट ऑल्सो ऑल दीज पीपल वर अमेच्योर, ओके, कुछ एक्सपीरियंस नहीं, कुछ भी नहीं. एंड हम लोग ने बस डिसाइड किया कि वी आर गोइंग टू जंप इनटू इट फॉर हिज लव, टू विन हिज हार्ट. एंड व्हेन वी डिसाइड एंड डू समथिंग टू विन हिज हार्ट, नथिंग इज इम्पॉसिबल. That is what we experienced. So the whole experience was so beautiful कि not only all these people, they performed on stage, which was for the first time, but all of them sang, they won prizes, even quiz में भी Love House जीत गया, and it was so wonderful. And obviously Love House has to win, so we were the winners. Yeah, add something here. Yes, sure. Love is above everything else, always. Or you were fortunate enough to select that house. वो तो सही है. Now talking about all the novices कि जिन्होंने लाइफ में कभी स्टेज पे एंट्री नहीं की थी, कभी किसी ने गाया नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था. तो मैंने कहीं पे एक सेंटेंस पढ़ा है कि बाबा does not choose the qualified people, but he Absolutely. qualifies the ones whom he chooses. Absolutely. यानी जो भी कोई तुम्हारे पास नॉविसेस आए, मेरे जैसे अन्नाड़ी, उन सबको बराबर लाइन पे ठिकाने पे लाके. द बेस्ट एग्जांपल इज ये जो मैडम हंस रही है इधर चश्मा लगा के, जेनिस, 32 दांत दिख रहे हैं उसके अभी. सो दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट. बाबा की
कोई भी इवेंट में पार्टिसिपेट करना is an honor and a privilege in itself. और जो कोई उसको खो देता है उसको वो दोबारा वापस कभी नहीं मिलता है. That is my feeling. So whenever anybody offers you a chance to serve him or do anything in his name, run up, get up, run and grab it. Because वो मौका फिर बाद में कभी वापस नहीं मिलता है. Thank you. Yes, Sam, I 100% agree with you. I think Dilshad has raised her hand. From DG Kapadia. Go ahead, DG Kapadia. That is Dilshad Kapadia, Samangal. Jai Baba. Jai Baba. So, since the topic of winning his heart has come, I want to make 2 points. One is that, I took part in both the quizzes that were there, and it taught me so much because there was a syllabus, some pages that were marked. So my suggestion or my recommendation is that we should have these quizzes because that increases our knowledge and increases our, gamut of things that we can learn about Baba. And I definitely learned so much from those 2 quizzes. And in the second quiz, incidentally, the partner that I got at the last moment, I don't know whether the partner remembers. Was it Sam? No wonder. You must have definitely lost, Dilshad. Jai Baba. Jai Baba. Dilshad, I suggest next time whenever you have to participate in all such things ना, कोई ज्योतिष को कंसल्ट करके आओ कि मेरे को जय बाबा. Not at all. It was fun. And in fact, Sam Uncle, we were just made partners in terms of lucky dip or whatever last moment. And Sam Uncle answered so many questions just like that Arthur point in Lonavala or Pandala, wherever that is, which I did not know. Jai Baba. Yeah, so Dilshad, we have continued with winning his heart. It's still on and it will be on forever, as long as we can go, as far as we can go, rather as far as Baba wants it to go. So yes, it is on. Mervina, I had also made one request the same time that Kundaji had made. And my simple request is that, do you know of any ghazal which in particular Hoshang Barucha uncle liked? If you can identify and sing that. Hoshang uncle. Actually, I'm not able to recollect any such incident where he specifically mentioned about any particular ghazal. All that I know that he took the initiative of, coming up with this album of Huma. Because he loved all those ghazals, because during the programs he had heard me singing. So he loved almost all of the ghazals, and that's when he suggested me that I should come up with an album of Huma. So nothing in particular as such. Yeah. Just last question: where can we have these Huma songs? Or now that cassette is not usable. Yeah, so I'm planning to upload all these ghazals which I had recorded on YouTube. So two videos are ready. Me and my son. My son actually is working on the video. So as and when it is ready, we'll start uploading it. Because I've got this request from many people. So I think it's high time that I need to take it very, very seriously and treat it as a ASAP thing and do it right away. Sure. Mervina, I've had the good fortune of hearing both your parents, and that's an awesome opportunity that I had at Bombay Center. Thank you. Yeah, so
Dilshad, since you said that you had that opportunity to listen to my parents, so just for your information, there is a YouTube channel that I've created on which I've uploaded all the songs sung by my mom, and she has sung all the songs, the original Madhusudan, songs. So Lovely. you'll get the original tunes, yeah, on that. Do let us know the link, and Janice can send it on the group so that we can Okay, we'll take do it that. forward. Thank you for allowing Thank me you. to. Thanks, Dilshad. Thanks. Not Jai at all. Baba. Thank you, Baba. Thank you, Baba. Abhi, Yeah. can you start with the brief this thing of your trip to Australia? Yeah. You- So, yes, sir. You were saying something? Whatever that comes to your mind, whatever you want to know. Okay. First time when I visited Australia was in 1998 with my father, late Kishore Mistry. And that time I had, because my Huma album had already got released, and dad had taken almost 75 to 100 copies of the cassette in Australia to be donated to Avatars Abode. So that's when people heard about Huma songs. And so there was this person called John Isaac. Okay, when he heard, he said to me, I have heard a lot about your ghazals, and you have been composing tunes and music to ghazals. I give you this as a challenge. Can you take this challenge? I said, what is it? We have Francis Brabazon's ghazals with us. So can you compose a tune to one of Francis Brabazon's ghazals, but in a Indian style? अभी इंडियन स्टाइल ऐसे होती है कि हम लोग दो कपलेट्स गाते हैं and again we come back to the first two lines of the ghazal. That's how it goes. So I said, fine, let me give it a shot. And so I was just sitting there, and we were staying at Peter Roman's house. It was a nice, beautiful wooden house. So I was sitting alone since the anniversary had got over, and we were planning to stay back for another 2-3 days. So dad with Dara, Uncle Dara Katrak, then the president of Bombay Center, was also there. We had a lot of fun together, in fact. So they all had gone out, and I was having this cassette of Piano by Candlelight, which is my favorite. I love piano. That's my favorite instrument. I was just sitting and playing that cassette, thinking that how am I going to compose a tune to Francis Brabazon's ghazals? I had never opened that book, never ever read any of the ghazals. Rather, I was not even aware that Francis Brabazon had written ghazals. They call it as ghazals. So I was just sitting, and while listening, just one single note from that particular track which was playing, it hit me. एक सुर खाली एक सुर था उस पूरे म्यूजिक में, वो सुर मुझे हिट हो गया, एंड आई जस्ट स्टॉप किया उस गाने को, उस सॉन्ग को. इंस्ट्रूमेंटल था. आई जस्ट स्टॉप दैट सॉन्ग एंड पिक्ड अप दैट वन सिंगल नोट, एंड एक नोट से वो पूरे गाने का मतलब म्यूजिक कंपोज हो गया. एंड आई वाज एबल टू कंपोज music of ghazal number 9, which they say that is one of their favorite ghazals, which later on I got to know that was one of their favorite ghazals. So again, see how Baba was present everywhere, and he was the doer, he was the listener, he was the composer, because the tune got composed in such a beautiful way. And then the fillers which I had put, the instruments that I used santoor, piano, violin, so to give that Indian feel again. And so that's how I was able to compose that tune. And that very same day, I had invited everyone for dinner. So I sang that song, ghazal number 9 of Francis Brabazon, in front of them. And John was very happy, and he said that you have passed the test. You have cleared it, because it was a challenge that I had given you, and I am completely happy and satisfied with whatever you have done. So that was one thing that I remember. Yeah, Dilshad?
You want to say, ask So something? you mean to say he had written it in Hindi since you're calling no. it ghazal? They Australians call it ghazal. It's a song. It's in English, of course. It's in English. Yeah. Francis was a poet and he wrote all these poetries. Sometimes Yeah. you see ladies like Pat and others who come to the Samadhi, they read out his poems at the Samadhi. So, to set it into this tune was a challenge, and I think it was a challenge from Baba actually. वो जो था वो, that fellow was just a medium. Of course. Yeah. Yes, and Baba wanted to prove कि भाई, I don't know, this is just my feeling, कि east or west, what he wanted to bridge that gap between the east and the west. This was one of the means of doing it. Ki an English poem written in English can also be set to a Indian ghazal ka tune. So that is what I feel. Jai Baba. Yeah. And Sam, Francis Brabazon was also one of the men Mandali, right? Very much so, very much so. Yeah, yeah. So that Can I was- say something? Sure. Kunda? I remember Baba said Francis Brabazan will be the Hafiz in my next advent. Mm-hmm. Wow. I remember somewhere I heard it. Mm-hmm. Okay, Jai Baba. Thanks for sharing that. Veena, do you have a Yeah. recording of that also? Yes, I do have. But that's in the audio form. But if I am in fact planning to upload everything, whatever compositions I've done, prepare a video and upload it on YouTube channel. Yeah, I'm planning to do that, and it's going to be one single common channel where I've uploaded all my mom's song. So on the same channel, I'll be uploading all my songs also. So yes, Looking forward to it. Thank you. sure. Yeah, Archana. MV, why don't you sing a few lines and let us hear this Oh, now? Is it possible? okay. आपने इसको फंसा दिया अभी. Thank you. See, Sam, Yeah. these are the googlies that Baba put. Abhi यहाँ पे, if you see the setting which I have done, जिसमें सामने सब हिंदी गानों की डायरी रखी है. Sorry. I thought कि Francis Brabazon का गजल गाने का तो कुछ चांस नहीं. I don't think so. I will be singing. तो वो बुक को मैंने साइड में रखा है बराबर बाप. Wow. That is his divine sense of humor. Veena, we can have it again next Thursday. English Oh. song. अभी लोग पकड़ के मुझे One whole Thursday English songs. No worries. Only if it's convenient, Marvina. No, I can, of course. One sec, just give me 1 second. Sam, you can talk something in the meantime. I'll just bring the Thank box. you. 1 sec. Thank you. देखिए हमारी ये कोशिश है, it has always been our endeavor to do things as per Baba's wish in this program. There is no fixed agenda, there is no fixed schedule. We just go with the flow. And I'm so glad that people are asking questions. And this is how more and more things come out. This reminds me of the days when we used to sit in the Mandli Hall at Mehrazad, where Eraj Jasawala used to give talks. And there was a very clever American Baba lover. He is no longer around, unfortunately, who always needled Eraj. कि this and that and this and that ने ऐसा क्यों ने वैसा क्यों ने करके करके उसके पास से सब खजाना पेट में से निकालता था. I still remember एक टाइम उन्होंने पूछा था एरज को
कि why do we have to, हमें क्यों इनकी ये छवि, इनका जो पिक्चर है, why do we have to worship this? Why don't we worship his, ये जो निराकार जो स्वरूप है? He went on and on and on, and एरस बेचारा मुंडी हिलाते रहा. And finally, when he felt it was too much, उन्होंने एक ही लाइन में उसकी बोलती बंद कर दी. उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये ही, the human form is enough. If we were to see his universal form, निराकार स्वरूप जो जिसकी बात कर रहे हैं, जो दूसरा क्या वो वर्ड है अपना, विराट स्वरूप. हाँ, अगर हम वो सब देखें तो these were his words कि तुम्हारी पटलून गिल्ली हो जाएगी. So this is what I remember. Anyway, go ahead, Mervina. Yes. So in the track which I have made, usme I have started the song with instrumental, okay, with instruments and with the rhythm. It starts with a rhythm, but just to give a more of a ghazal feel, I'll start with a alap. So you people will be clueless as to what exactly I'm going to sing ahead. Family, sorry to interrupt, but your Yeah. voice when you sing, Yeah. it fades off in between. Okay. Is it audible now? Yes. Yeah, and Janice, can you put Baba's picture I on will, the I screen? will. Yeah. Just Thank your you. sound when you sing is not clear. Yeah. If you can Okay. check on that. Is it clear? Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Okay. Thank you. Baba picture, please. Yeah. Thanks. You warned us that on this path was nothing but pain. You warned us that on this path was nothing but pain. And we bravely assented, but now we complain. You warned us that on this path was nothing but pain. We were ascending to what was our ideal of pain. We were ascending to what was our ideal of pain. Tangible enemies to be suffered for love's gain. Tangible enemies to be suffered for love's gain. And we bravely assented, but now we complain. You warned us that on this path was nothing but pain. Jai Jai. Baba. So it's a long song, but the tune for all the verses is the same. So I just sang the first verse of the song. चल अभी Yeah. वो बेगम अख्तर. All right. So Begum Akhtar ka before I sing Begum Akhtar's "Ae Mohabbat Tere," I have a very sweet memory of this particular ghazal in the sense that when it was the centenary year of her birth, which was 2014,
I was in Mehrabad and they were going to celebrate the centenary year of Begum Akhtar's birth. So Hyderabad Center had decided to perform a concert at Mehrazad. तो पता नहीं मेरे मन में ऐसे आया कि मुझे अब की बार गाना नहीं है. आई एम जस्ट गोइंग टू बी देयर, सिट देयर एज ऑडियंस एंड बस सुनूंगी उनका गाना. So that's what I had thought of. And it so happened that we all had gathered. I mean, me, my family, everybody was there because I remember my sister, Meher Shobha, my mom, that time she was in a very good condition. So she was also there and other relatives were also there. So but others were not interested in coming to Mehrazad. So it was only me, my sister and my mom. So I had got my car. So I just said, okay, let's drive and let's go to Mehrazad, since the others are not interested. So we drove all the way to Mehrazad. और वहां पे जाने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि Mehrazad खाली है. Nobody was there. Okay. And तो we were surprised and then we thought कि maybe बाद में बस आने वाली होंगी. And जैसे ही हम अंदर गए वहां से we saw Mehra Arjani coming and greeting us and giving us a warm hug. And she said, oh my God, it is so lovely to have you guys here. But how come આજે કેવી રીતે તમે લોકો આવી ગયા? So we said, આજે એટલે so there is a concert of Begum Akhtar. So we have come to attend that concert. So she said, नहीं भाई આજે નથી काले છે. It's not today. तो हम लोग ने सोचा, oh God, अभी then what to do? So एक तो ऐसे लगा कि वाओ एक अच्छा मौका मिला है, चलो let us enjoy the garden. So we went, we sat on the swing. Otherwise वहाँ पे क्यों रहता है, मोस्टली बच्चे होते हैं तो चांस मिलता नहीं है. तो कोई नहीं था तो मस्त. My mom also, she loves to sit on the swing. So she also sat and we had a good time. But then Merwan Jasawala, Merwan uncle was there. And he caught hold of me and he said, Anya avi jao. Sit next to me. Do you know this ghazal of Begum Akhtar, Ae Mohabbat Teri? And I said, yes, very much. I know that ghazal because we had performed, Meher Baba on music episode. So Usme had already sung that ghazal. And he said, can you please sing that ghazal for me? And I sang it for him and he was lost completely. He could recollect the wordings because he was singing with me. And that time I felt as if history is repeating. Why I'm saying history is repeating? Because my mom had a very soft voice and Baba wanted to listen to her voice personally. So he kept a special meeting in Guru Prasad, a small music concert exclusively only to listen to my mother singing. And एक छोटी सी रूम में मॉम का गाना रखा था. And I got the same feeling कि because I had thought कि मुझे गाना नहीं है, I'm going to be a part of audience. So Baba took care of both the things. He not only made me comfortable by, giving me the entire platform like Mehrazad, कि जहाँ पे आजू बाजू कोई नहीं है, and he made me sing one of, maybe it must be his favorite ghazal because the ghazal is based on love. So that was a beautiful memory of Ae Mohabbat Teri. So let's see, koshish karti hu aaj. And yes, there was another small experience that I had when I was singing this ghazal at the Samadhi one day in the evening. This Sufi group, the entire Sufi group was there. And one of the Sufi member was sitting at the Samadhi. And as far as I had heard about Sufis, they were not allowed to mingle around with other pilgrims around. They were supposed to be with their group members only. But this was the only Sufi guy who, after I finished singing the ghazal, he said he was all in tears. Of course, he didn't understand the meaning, but he could feel the love in that song. And he said that I would like to meet you at MPR. Can you meet me at MPR? I want to discuss about this song. And you made me feel that love. And he was crying. And when I met him at MPR, he said that all I could understand
that this is all about love. And I was amazed to hear that, because being a Westerner, एक word का meaning भी समझ में नहीं आया, but all he could understand that it is all about love. So that's the amazing thing of this ghazal. So I would like to present that. ऐ मोहब्बत तेरे अनजान पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अनजान पे रोना, ऐ मोहब्बत तेरे अनजान पे रोना, तेरे अनजान पे रोना, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया, क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत यूं तो है शाम वो जरा आज कुछ बात है जो शाम पे रोना, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया, है मोहब्बत कभी दिल कागना कभी तकदीर मातम कागना मंज़िले इश्क में हर गाम पे रोना आया, मंज़िले इश्क में हर गाम पे रोना आया, है मोहब्बत जब जिक्र ज़माने मोहब्बत आशिक़
मुझको अपने दिल ना काम पे रोना है मोहब्बत तेरे अनजान पे रोना है मोहब्बत तेरे है मोहब्बत अवतार मेहर बाबा की जय. Jai Meher Baba. Veena, I just have one request. Yeah. When you're talking, your audio is very clear. But when you sing, it keeps cracking up. I don't know if you can fix it. Please try and fix it from your end or through Janice or whatever. And sing this ghazal again because. Yeah, please. Actually, Randy, yeah. can I suggest, can you do without the harmonium? Just the Sorry? singing. Can you do without the harmonium? Just the singing. Is it Acha, possible? without the harmonium. Okay. Because the minute you go away from the mic, Yeah. voice wavers. Okay. Okay. I think somebody heard anyways. Before we carry on. Yeah, Sam, please say something. Just give me some No, time. you're okay. I can hear you very well. Just sing one or two lines so that then we can say कि हाँ भाई चलो अब पूरी गजल इसी में ऐसे ही गा लो. Do the trial run. Hello. You're muted, Veena. Yeah. Okay, we'll try. ऐ मोहब्बत तेरे अनजान पे. This is beautiful. Just go ahead. Okay. It is. Jai Baba. है मोहब्बत तेरे अनजान पे रोना यार है मोहब्बत है मोहब्बत तेरे अनजान पे रोना जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया है मोहब्बत. यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाते जाने आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया जाने क्यों आज जाने आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया है मोहब्बत. जब हुआ जिक्र ज़माने में मोहब्बत काशकी जब हुआ जिक्र ज़माने में मोहब्बत काशकी मुझको अपने दिल नाकाम पे रोना मुझको अपने दिल नाकाम पे रोना आया है मोहब्बत तेरे अनजान पे रोना आया जाने क्यों आज
तेरे नाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत हाय, ऐ मोहब्बत। Thank you very much, Jai Baba. जय बाबा, जय बाबा। Would you like to give a background of this Begum Akhtar? She was a famous singer and all that. To bolo jara thoda. So Begum Akhtar, as you all know, was a renowned, she was a ghazal queen. And when she was in her peak time, जब वो काफी फेमस थी, पॉपुलर थी, तब बाबा ने उनको इनवाइट किया था टू परफॉर्म फॉर हिम। पर उस वक्त बेगम अख्तर ने बोला मैं 1000 रुपए चार्ज करूंगी, एंड बाबा सेड नो थैंक यू वेरी मच, एंड she turned her back. But years later, she must have got some experience, and which made her come back to Baba. And this time she asked Baba and requested Baba, can I perform for you? And this is the ghazal that she had been singing in front of his frame. And finally Baba ne unhe mauka diya. So she had come to Guru Prasad and she presented this ghazal in front of Baba, and she was in all tears. And Baba ne apna khud ka handkerchief unko diya aur unke aansu पहुंचे. And that's when I'm sure she must have realized that she couldn't, understand that the love personified, the God in human form is here, right here. And she was so fortunate being invited by him, and she rejected that invitation. And, she was, and later on, I think she must have realized that importance of love, and that she must have also felt the intensity of that love while singing that song right in front of beloved Baba, right in front of the Lord. Now, to tell you a small background about the words, and the writer of these words is Shakil. Shakil Badayuni. Yeah, Shakil Badayuni. And as far as I can remember, शकील बदायूनी के दिल में बहुत गम था, और प्रॉबली जो कुछ मोहब्बत में जो होता है वो उन पे बीती होगी, और ही पेन डाउन दिस वर्ड्स, उन्होंने लिख दिए थे कागज पे. एंड इट सो हैपन कि बेगम अख्तर नेक्स्ट डे ट्रेन से कहीं पे प्रोग्राम करने के लिए रवाना होने वाली थी, एंड ही वॉज टू गो एंड सी हर ऑफ. उनको विदा करने के लिए वो जाने वाले थे, तो उन्होंने वो कागज अपने खीसे में डाल दिया. एंड वाइल्स द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग आउट, उन्होंने उसके हाथ में ये कागज थाम दिया और बोला कि ये ट्रेन में बैठ के आप उसके ऊपर कुछ लाइक हाउ मेरवीना डज इट, वैसे कुछ ट्यून बैठा के कुछ करो. एंड it became one of the most popular ghazals of Begum Akhtar. This is the story. ये मोहब्बत, इश्क, डिवाइन लव जिसको हम कहते हैं, वो चीज is beyond words. I cannot describe it. I cannot describe it. वो तुम्हें अपने आप में अंदर में महसूस करना पड़ता है. You have to feel it within. And only when you feel it within, ये ऐसी शिकायतें निकलती है कि मोहब्बत तेरे अंजाम, अंजाम मीन्स योर रिजल्ट पे रोना आया. जाने क्यों, क्या, what are the words, मीना? जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया.
मोहब्बत के नाम पे रोना आया, बिकॉज इसमें तबाही होती रहती है। और ये जो गम है, only when a person experiences this kind of gum that this kind of composition comes out. That is my firm belief. और वो खुदा उनको इंस्पायर करते हैं उस समय टू कंसोल देयर हार्ट्स। खुद खुदा ही उसके ऊपर जुट जाती है, and then this kind of words and this kind of ghazals pour out of there. I don't know if I should be saying this, but हमारे सेंटर पे एक आते थे ऑस्ट्रेलिया से, जहांगीर डावर। He was of the firm belief कि all these so-called जो ये ऐसे उम्दा गजल वगैरह लिखने वाले हैं, they are spiritually advanced souls. He was of the firm belief. I don't know what is what. It is not for me to decide, not for me to say कि भाई ये प्लेन पे था, वो प्लेन पे था, whatever it may be. मगर ये जब दिल में दर्द होता है तभी ऐसी चीजें बाहर निकलती है। एंड दैट इज वाई बेगम अख्तर बाबा के कदमों में बैठ के रोई थी। एंड शी वॉज सो फॉर्चुनेट कि द लॉर्ड हिमसेल्फ, उन्होंने रुमाल लेके उनके आंसू पहुंचे, एंड देन ही gave away that rumal to her to keep it. So here, Sam, I would like to put up my thoughts over here in the sense कि मुझे ऐसे लगता है कि मतलब after I was going through the overall meaning of this ghazal, मुझे ऐसे लगा कि हम कितनी बार उस खुदा को we disappoint him by not loving him the way he should be loved, but still he loves us so much. Each time we fail, but it is he who lifts us up and helps us to rise again. Absolutely, absolutely. हमारी क्या औकात है कि हम उसे we just don't know how to love him. We just don't know. और हमारी औकात नहीं है कि हम उसे उस तरह प्रेम करे जैसे वो उनको प्रेम करना चाहिए। नीरज कराड़िया जो हमारे सेंटर पे आते थे, अभी वो बेचारे बहुत ही बीमार होके, लाचार होके घर में बैठे हैं। He always used to say, I am not a Baba lover, क्योंकि मुझे ये मालूम नहीं है, मुझे ये आता नहीं है कि बाबा को कैसे प्रेम करना। It is he who loves me. और इसलिए मैं आते जाते ये धक्के खा रहा हूं। That is what it is all about. Anybody wants to ask anything? ये बहुत अभी मामला सीरियस हो गया है, but still कुछ भी, जिसको कुछ भी पूछना है, please feel free to ask. Okay, carry on with your final song. Yeah, so before I go ahead with the final song, the final song is Sham Sundar Ki Sudh Jab Aayi. So this was the last song that beloved Baba sang before observing silence for the next 44 years till he dropped his body. Can you please repeat that? This was the last song that Baba sang. This was the last song that beloved Baba sang before he observed silence for the next 44 years till he dropped his body. And it so happened that in our first series of In Search of God, the first series of our drama, In Search of God, we were presenting the play on the life and working of beloved Baba. So when there was a scene where we had to present this particular
song, that was the first time when Nalini auntie told me that अब की बार ये बाबा का गाना है जो उन्होंने आखिरी बार गाया था, तो किशोर भाई से ये गाना मिला है. My father had a collection of such rare songs of which I was never even aware of. So I got the song from my father. अभी गाना तो मिल गया, लेकिन क्या गाया था उन्होंने, कैसे गाया था? Of course, for me, I was clueless because I was not even born and I had never heard बाबा. तो उनको सुनने का तो सवाल ही नहीं है, तो किस ट्यून में इस गाने को गाया होगा बाबा ने. So I was in a fix कि अभी इसको कैसे करूं. Finally, I told myself, just calm down, sit in front of Baba and let him take over. And I just said to Baba, you know, आपको पता है आपने क्या गाया, कैसे गाया. I am sitting here right now. You are the one who's going to do this, compose this. And later on, the whole tune got so beautifully composed. And I was so happy that usually my brother, he never used to participate, in this drama thing. But I was so happy that at least इस गाने के बहाने उनका इस ड्रामे में कंट्रीब्यूशन हुआ. सो फर्स्ट टाइम इस गाने को जब ड्रामे में प्रेजेंट किया था, तो it was in his voice. I had taken his voice for this particular song. So I will just, in brief, I will just tell you the overall meaning of this song. This is, it's a beautiful song. Shyam Sundar ki sudh jab aayi, sarson फूली आंखों में. Yeah. पहले ये किसने लिखा था और कौन से साल में and कौन जरा please. Yeah. So this song is written by a prominent Sufi saint named Hazrat Shah Niyaz. And the overall meaning of this song is, Hazrat ji bolte hain कि the minute I realized God, the truth unveiled itself before my eyes, like the most beautiful unveiling of the mustard flower. So that's the overall meaning of this song. And I would request you all to just close your eyes, imagine beloved Baba in front of your mind's eye, and just enjoy the way he has composed this song. Janice, can you please put Baba's picture on screen? Thank you. सुधा जब आई, सरसों फूली आँखों में, शाम सुधा जब आई, सरसों फूली आँखों में, कुछ कहा कुछ देख दिखाई, सरसों फूली आँखों में. हर समुंदर पहचानो, हर जर्रा को खुद शिव, गुरु जी सुझाए, सरसों फूली आँखों में. बंदे को अल्लाह दिखाना, कैदी को बंदे को अल्लाह दिखाना, कैदी को हो, अनकहनी मुझसे कहलाई,
सरसों फूली आँखों में शाम सुबह जगाई सरसों फूली आँखों में। लिया आप तो आपने जान पूजा लिया आप तो आपने जान पूजा तो जिद निगल गई पर्वत कोराई सरसों फूली आँखों में शाम सुंदर सुध जगाई सरसों फूली आँखों में कुछ का कुछ के देत दिखाई सरसों फूली आँखों में सरसों फूली आँखों में सरसों फूली आँखों में। अवतार मेहर बाबा की जय। Jai Baba, everybody. Did you all get to hear this? किसी ने कुछ बोल रहा है chat पे, let me check. It would be nice if the entire session with or without editing is uploaded to YouTube. Jai Baba. किसी ने ये बोला है. Archana Grover says it was wonderful. बीच बीच में थोड़ा सा जरा तो हारमोनियम पे जाती थी तब भी वो क्रैक हो जाता था. आई डोंट नो व्हाई ये कुछ. बट ऑल सेड एंड डन, दिस वाज ब्यूटीफुल. Thank you so much. और दिस इज ऑल अबाउट जब इंसान के आंखों से वो पर्दा निकल जाता है. द वेल इज रिमूव्ड. ये जो सूफी सेंट जिन्होंने ये लिखा है, उनकी आंखों से वो जो पर्दा जब निकल गया, तब ही कुछ सी खुदा एनीवेयर एंड एवरीवेयर, मस्टर्ड सीड्स और ड्रॉप इन द ओशन वगैरह वगैरह जो भी कुछ है, वो उसकी सब बयान, उसका सब डिस्क्रिप्शन ये सॉन्ग में है. If we have time or if everybody agrees, we can go into it. इसका overall meaning जो है, the minute I realize God, जब मैंने खुदा को पा लिया, ईश्वर साक्षात्कार किया, the truth unveiled itself before my eyes. जो सत्य है, there is only one truth, और वो मेरे आंखों के सामने आ गया, like the most beautiful unveiling of the mustard flowers. ये जो हम सरसों के फूल, सरसों का साग जो बोलते हैं, सरसों के फूल, that is the mustard का flower. This is a song written by Hazrat Shah Niaz, who was a prominent Sufi saint. Prominent Sufi saint. So, it is my firm belief that music, musicians, and people with creative talents have the ability to take us closer to God.
towards divinity. And जब भी, that is why Baba used to encourage such singers and such programs, ताकि लोगों को दिल में ये कुछ तरी जागृति होवे, that gradual awakening for which he has come, वो थोड़ी जागृति होवे कि I don't know how to express this, but संगीत के जरिए खुदा को पा सकते हैं. The final, ultimate. और I have narrated this incident couple of times. पता नहीं आज क्यों मेरे दिल में आ रहा है, तो आई एम शेयरिंग इट अगेन. मैं एयर इंडिया में पर्सर था और एक दफे फर्स्ट क्लास में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और शर्मिला टैगोर एंड दिलीप कुमार, ये तीनों फर्स्ट क्लास में थे. तो टेक ऑफ के बाद दिलीप कुमार उठ के उनके बाजू में बैठ गया एंड दे वर टॉकिंग ऑन म्यूजिक एंड आर्ट एंड दिस एंड दैट. मेरे कान खड़े हो गए थे, मैं आई कुड नॉट रेजिस्ट. बहुत अटर फटर हो रही थी. फिर मैंने आई जम्प्ड इनटू इट और मैंने बिस्मिल्लाह खां से पूछा कि सर, मैंने सुना है कि संगीत के जरिए खुदा का दीदार हो सकता है, क्या यह सच है? अर्चना जी राइट, संगीत आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है. वेरी ट्रू. बिस्मिल्लाह खान जब ये सुना तो वॉज क्वाइट रादर सरप्राइज कि ये यूनिफॉर्म में चकाचक आदमी ये क्या सब बात निकाल के बैठ गया है. तो सरप्राइजिंगली ही आज, अरे बेटे तूने ये सवाल कैसे किया? मैं बोला सर मुझे मालूम नहीं, मेरे भेजे में आ गया, मैं बोल दिया. ही इज टेलिंग दिलीप कुमार आप जरा हटिए, इसको बैठने दीजिए. मैं बोला नहीं, आई एम नॉट अलाउड टू सिट नेक्स्ट टू यू, मैं खड़े रह के ही सुनूंगा. तब उन्होंने अपनी ओरिजिनल जो संगीत की जो साधना करते थे उसकी बात मुझे बताई. उन्होंने कहा कि जब मैं उनकी जो शहनाई का जो शहनाई वादन जो उनका था, it is achieved over years and years and years of practice. तो ही सर जब मैं बहुत छोटा था और ये इस पे मैं प्रैक्टिस करता था, तो मैं सुबह जल्दी उठ के मेरे गांव में एक छोटा सा खंडेर मंदिर था, उसमें मैं बैठ के, क्योंकि आई वांटेड पीस, कोई आजू बाजू कोई नहीं होना, बस अकेले दिल खोल के मैं ये मेरी शहनाई बजाता था. तो एक दिन ऐसे ही बजाते बजाते आई फेल्ट कि मेरे पीछे कोई खड़ा है. तो आई टर्न्ड अराउंड एंड आई नोटिस्ड मां सरस्वती खुद वहां पे प्रकट हुई थी. एंड शी ब्लेस्ड हिम. उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं तुम्हारी ये साधना से बहुत प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि ये जो तुम्हारी कला है सारी दुनिया में प्रसिद्ध होगी. यू विल बी एबल टू
take this around all over the world. आपको पैसे कुछ खास मिलेंगे नहीं, लेकिन खुदा की तरफ में तुम बहुत आगे चले जाओगे. This is what she blessed, and then of course वो वहां से डिसअपियर हो गई. और ये सुन के मैं चकित हो गया कि हियर इज बिस्मिल्लाह खां, यानी कि पक्का मुस्लिम, हाँ, और उसके पीछे खड़े रह के मां सरस्वती उसको आशीर्वाद देती है. इट जस्ट गोज टू प्रूव कि संगीत में कोई किसी धर्म का, कोई किसी जात का भेदभाव नहीं है. These are all man made. हम शैतानों ने ये सब किया है. Whereas कुदरत जो है, खुदा जो है, वो कभी इस ऐसे भेदभाव नहीं. Anyway, to cut the long story short, I can get very emotional on this. तो फिर आखिर में मैंने वो मेरी चमचागिरी की आदत से उनको बोला कि मुझे आपकी ऑटोग्राफ चाहिए बिस्मिल्लाह खां की. तो उन्होंने कुछ उर्दू में लिख के दे दिया, विच आई कुड नॉट अंडरस्टैंड. पहले तो मैं खुश खुश होके अंदर चले गया, गैली में जाके देखा तो उर्दू में कुछ था, तो मुझे समझ नहीं आया. मैं वापस गया उनके पास, मैं बोला साहब ये आपने क्या लिखा है, मुझे समझ में नहीं आता है. तो दिलीप कुमार मेरे सामने देख के कहते हैं, अरे पगले, इन्होंने लिखा है बिस्मिल्लाह, इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए? What more do you want? I'll never forget this. I'll never forget this moment. This was not thought of, Mervyn, I am sorry, this was not in our schedule. कुछ नहीं था, मगर ये पागलपन भेजे में आ गया और मैंने बोल दिया. Oh, Sam, it was beautiful. Thank you. Yeah, Good, indeed, it that was a you got beautiful some experience. pagalpan. Yes. Good you got some pagalpan. I have never heard this story from you, so I'm delighted to hear it today. Thank you. Jai Mer Baba. Same here, Sam. ये जो खुदा के प्रेम का जो पागलपन है ना, आई एम लिटरली स्केयर्ड ऑफ इट. आई विल बी वेरी फ्रैंक. क्योंकि जिसको ये बख्शिश या ये गिफ्ट जो मिल जाती है, वो ना तो ये दुनिया का रहता है, ना तो वो दुनिया का रहता है. मगर खुदा को पाने के लिए बाबाज वर्ड्स कि बंदे खुदा, कोई एक ऐसा आदमी जरूर पैदा होगा ये सेंटर से कि जो उनको पाने के लिए उनके प्रेम में पागल हो जाएगा. एंड द डे दैट हैपेंस, आई विल बी द हैप्पीएस्ट टू से कि ये इतने सालों से ये जो भी कुछ सेंटर चलाते हैं, फांफे मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कोई एक भी बंदे खुदा जो पैदा हुआ जो बाबा को पसंद आए, ऑल दिस मगजमारी दैट वी डू विल बी रियली वर्थ वाइल. मुझे और कुछ कहने लिए ऐसे जाए तो बहुत कुछ है, और नहीं तो कुछ भी नहीं है. बिकॉज जो भी कुछ पाना है वो अंदर पाना है. एंड एक कहीं पे मैंने पढ़ा था, एक फकीर का डेफिनेशन, एक फकीर की जिंदगी ऐसी होती है कि जो उसका जो सिद्धांत होता है वो खाना कम खाता है. फकीर, अ ट्रू फकीर, हाँ, कम खा और गम खा, गम पेट भरता है वो. वैसी हालत होती है ये.
तो ये हम लोग के लिए ये सब ठीक है, यहाँ बैठ के ताली बजाते हैं, वेरी नाइस करके घर पे चले जाते हैं। नीरज जसावाला ने एक समय मंडली हॉल में कहा था कि ऐसे ही कोई मेरे जैसे आलतू फालतू ने पूछ लिया कि नीरज भाई, ये आप लोग मंडली में है, बाबा के साथ रहे थे, ये थे वो थे, बाबा सब जगह पे है, हम लोग हमारे घर में भी बाबा की ये कर सकते हैं, तो यहाँ पे मेहराजाद और आप लोगों को मिलने को आना और आप में और हमारे में एक्चुअली फर्क क्या है? पेरेस ने बहुत ब्यूटीफुली उसको समझाया। वो आदमी, द मैन वॉज फ्रॉम दिल्ली, तो उसको पूछा कि आप दिल्ली से हो? तो ही सेड यस, एंड इट वाज विंटर टाइम। तो उन्होंने पूछा कि वो विंटर में तुम्हारी दिल्ली के गली गली के नाकों पे लोग क्या करते हैं? वो फायर, थोड़ा सा तापनी जला के वो अपने आप को गर्म करने की, हीट लेने की कोशिश करते हैं। तो बोला हाँ, वो तो इट इज अ रेगुलर साइट इन दिल्ली। तो नीरज ने हंस के कहा कि ये जो आप लोग सब आते हैं यहाँ पे, वो ऐसे ही यहाँ से वार्मथ लेके, यहाँ से हीट जो भी कुछ है वो लेके चले जाते हैं, लेकिन जो यहाँ पे रहते हैं और जो बाबा के साथ समय बिताते हैं, वो उनकी हालत ये है कि वो उस आग में झेल जाते हैं। दे जंप इनटू दैट फायर। दैट इज द डिफरेंस। दैट इज द डिफरेंस। आज बहुत कुछ बोल दिया। आई थिंक टाइम हो गया है। किसी को? Uncle, हाँ जी। Perin Auntie mentioned the significance of today's day. Auntie, can you share with us? सॉरी Perinati before the- mentioned. Yeah, Auntie. Yeah. Perinati no problem. mentioned about today's significance, so we had requested her to share it yeah. with us. Sure, Yes, sure. Perinati. The only thing I wanted to say is that July 20th, 1925, beloved Baba started writing the book in the Jhopadi. So today is such a special day. And before the program started, Meena talked about singing this Shyam Sundar's ghazal. And I said, yes, it would be wonderful to put the picture of Jhopadi there, because today is really the Jhopadi day for us to remember. Plus Silence Day. But today happens to be the day when that very special book that we are all waiting for was started by Baba in the Jhopadi. Jai Baba. Jai Meher Baba. Thank you. ये हमारे मेहर बाबा ऐसे चैंपियन है ना कि कहीं ना कहीं से वो चीजें लाके खड़ी कर देते हैं। He always does this, and we think it is coincidental कि आज वो झोपड़ी का पिक्चर दिखाया और साइलेंस का ये दिखाया वो दिखाया, ये सब कोइंसिडेंटली हो गया। इट इज नॉट कोइंसिडेंस। कहीं पे कोइंसिडेंस का डेफिनेशन मैंने पढ़ा था कि इट इज एन एक्ट वे ही चूजेस टू रिमेन एनोनिमस, यानी कि खुद खुदा चुपचाप में बिना हो हा किए हुए जो सब कुछ यहाँ पे करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज, वी इडियट्स कॉल इट एज कोइंसिडेंस। इट प्रोबेबली इज अ कोइंसिडेंस के आज 20-25 जने यहाँ पे जुटे हैं, वॉट एवर इट इज। और अभी समय हो गया है। वी विल हैव टू कंक्लूड दिस मीटिंग एज मच एज अगेंस्ट माई विल, बट स्टिल हम लोग दुनियादारी से बंधे हुए हैं, तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द needs and requirements of the world. We shall now break into prayer and aarti.
and then we shall disperse. My dear friends, I sincerely hope and pray to Baba कि ये जो आज की जो चीजें हमने सुनी है, अगर उसमें से कोई भी एक चीज हमारे दिल और ज़हन में कुछ घुस गई, and if it has taken us even an inch closer to Baba, then this purpose is served. As a parting note, all that I would like to say is, खुदा को हम कभी समझ नहीं सकेंगे, हमें कोशिश भी नहीं करनी है उनको समझने की। हमें उनको बस इतना ही कहना है, हमारे पे नजर रखे और हम करते रहे। आज तक मधुसूदन के भजन में है कि आज तक तो निभाया था, आगे भी निभा लेना, क्योंकि हमारी ये औकात नहीं है। It is not in us. It is not in us to love Baba the way he should be loved or to please him the way he should be pleased. ये तो उनकी मेहरबानी है कि हमको बैठा के यहाँ पे सब कुछ बना बनाया हुआ पैकेज दे देते हैं। So let us remember him wholeheartedly, keep him with us until we meet again and rejuvenate it on the next Thursday. Thank you everybody. Mayor Veena, thank you very much. आपने जो संगीत सुनाया कि जिसके जरिए हम उनके करीब जा सके, दुनिया में बस ऐसे ही होता रहे। I don't know about others, but for me, if this thing keeps happening, I would be very happy in my last moments to remember all this, ताकि I would merge in him और मामला खत्म हो जाए ये सब झंझटबाजी का। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। Thank you so much. Always there for his service. Thank you so much. Thank you, Baba. जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। हेलो हेलो। Yes, Asha ji, please proceed. जय बाबा। Dennis, is it okay? Yes, uncle, it's okay. हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और कोई रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंडनीय हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो, तुम सब लोकों पर हो
और समस्त लोकों से परे हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सदैव हितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर ब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहुर्मज्द हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एकमात्र पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द तथा विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरे पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाए। और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक प्रियतम बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की जय। बुझावे नार जहलत नीए कर खुद रत्न फरमातु छैलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूर ईमातु अया मुर्शद मेहर बाबा चरण पर तुझ न दरिए सर खुदाना जात थी वाके फतही बे थो मेहर बातू तुझे मालिक हकीकत नो तू आशिक भी नयारिफ भी तुझे दरी
या है वहदत मारिफतनो ओ ही तूफातू हमोर है रफ मेहर साले बख्शे ज्ञान ईजदनो के तू पर महात्मा ज्ञानी छनय मुख तारे इरफातु खुदाना प्रेम नो प्यालो पिलावी मस्त हमने कर छे तुझ पर जान सदके साकिया पी दे पयमा तू हमारी नाव भर दरिए तरावे तो हमें दरिए हमारा ना खुदा है मेहर बाबा छयनी गे बातू हमारा ना खुदा है मेहर बाबा छयनी गे बातू बुझावे नार जहलत नी कर खुद रत्ने फरमातू छलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे ईमातू अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। O glorious eternal ancient one, your face is a bright transcendental sun. Lighten this dark world and the tears I weep. My heart meher I give to you to keep. Creator yet creation less you are, and truth's body divine avatar. Who through compassion the three worlds maintains, destroy this ignorance that life sustains. These five lights are the whirling spokes of breath of the world wheel that bears beyond to death. Unless you who are infinitely kind, break the wheels up which is conditioned mind. This incense is my love, these fruits my art, which to please you I have shaped from my heart. Accept them as you would a simple flower that has no use beyond its shining hour. You are myself, I sing to you in praise, and beg your love to bear me through the days. Till you, the ever-living perfect one, illume my darkness with your shining sun. Avatar Meher Baba ki jai. Avatar Meher Baba ki jai. Avatar Meher Baba ki jai. We'll observe a minute silence, please. Beloved Avatar Meher Baba ki jai.